आप सब जानते हैं सोमनाथ लिंग के स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव को सौंपे गए हैं और समय यही तो काल चक्र है जो इतिहास के पृष्ठों को वर्तमान में कभी कभी इस भांति खोलता है कि एक विस्मय होता है कि प्रकृति कितने समय पूर्व किस समय क्या होगा ये निर्धारित करती है। सोमनाथ लिंग के विषय पर एक छोटी सी फिल्म, ताकि आप उसके बारे में विस्तार से जानकारी पा सकें, बनाई गई है। आइए देखते हैं। This is the story of the most mysterious stone in the world, a 1,000-year-old levitating Jyotirlinga that disappeared after a horrific invasion. Lost, forgotten, until now. After centuries of secrecy, we're about to reveal what no one believed was possible. How was it found? Why is it so unique? And how, after 1,000 years, did it reach Gurudev? According to ancient Hindu scriptures, the Somnath temple wasn't just any temple, it was the first Jyotirlinga, the holiest of the 12 sacred shrines dedicated to Lord Shiva, said to be built in the Satyuga by the moon god Soma himself, and Lord Krishna had done penance here. The Shivling housed within the temple was unlike anything ever seen. It defied gravity. Hovering in midair, held by a powerful magnetic force, it was a source of faith and devotion for millions. But its power, its significance, made it a target. In 1026 AD, Mahmud Ghazni led a brutal invasion. Wave after wave, his forces stormed the Somnath temple, massacring thousands, looting its sacred treasures and shattering the sacred Shivling, leaving behind devastation and heartbreak that echoed for centuries. The Jyotirlinga was thought to be lost forever. After the Somnath temple was destroyed, the Agnihotri priests secretly collected the shattered pieces of the sacred Shivling, shaping them into smaller Shivlings, and made it their life's mission to protect them at all costs. For nearly 1,000 years, they kept it hidden and passed it down through generations. No one outside the family even knew. They performed rituals daily, waiting for the day when they could reinstate the Jyotirlinga in its rightful place. The priests worshipping the Shivling fragments noticed something amazing. The stones were magnetic. Maybe this held a clue to how the original Jyotirlinga levitated. Scientists ran some tests on the stones and the results were mind-blowing. I have not seen any white rock having a magnetic property. Firstly, it's super magnetic, but its magnetic field isn't at the poles like a normal magnet. It's centered right in the middle. Scientists were shocked because they've never seen anything like it. And it gets even more interesting. This stone has almost no iron, which is crucial for magnetic properties. Scientists were baffled, as no substance on Earth exists with this composition that displays magnetic properties. The iron content is 2%, but I am unable to explain why it is so, but there is definitely magnetic. There is no doubt about it, because I just now checked up with the magnet. It is magnetic. Ancient Indian scriptures have described such a material that actually came from outer space. In 1924, the Kanchi Shankaracharya instructed the priests to keep the Shivlinga hidden for 100 years. The Shankaracharya asked the priests to give the Shivlinga to Gurudev Shri Shri Ravi Shankar in Bangalore. That moment finally arrived in January 2025. Sitaram Shastri, the last custodian of the sacred legacy, made the journey to meet Gurudev Shri Shri Ravi Shankar, and he handed over the Shivling fragments to him. उन्होंने बोला, ये काम करने के लिए योग्य एक महात्मा है, उनके पास जाओ। ऐसा बोल के मुझे भेजा है, इसलिए श्री श्री रविशंकर जी के पास मैं आया हूँ। This Mahashivratri, the original Jyotirlinga will be revealed to the world for the first time in a millennium. और अब समय है दीप प्रज्वलन का परम पूज्य गुरुदेव के साथ
माननीय उप मुख्यमंत्री शिवाजी और चेयरमैन राजस्थान यूथ बोर्ड श्री नीरज के पवन जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के हमने दर्शन किए और मंच पर वो प्रतिष्ठित भी है और उसी के समक्ष दीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति का संवाहक के रूप में ये परंपरा पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रति। और अब मैं चेयरमैन राजस्थान यूथ बोर्ड श्री नीरज के पवन जी से अनुरोध करूंगी कि परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में अपनी भावनाएं व्यक्त करें। आज के इस उत्साह कार्यक्रम में राजस्थान की धरा पर परम पूज्य गुरु जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। समय चूंकि काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मैं सिर्फ दो बातें कह करके कि राजस्थान के यूथ को यूथ बोर्ड की ओर से दिशा देने के लिए परम पूज्य गुरु जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया और पहली बार जयपुर में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो तमाम युवाओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो जो मैसेज लेकर के जाएंगे वो बहुत बड़े क्रांति दूत का काम करेंगे, वो नशा मुक्ति के लिए काम करेंगे। हम सब मिल करके एक अच्छे राजस्थान, विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुरु जी का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद।